all the campaigns that we've run, which you have supported, those of you sitting here in the audience, those of you watching back home, to strengthen the laws. But we are in a strange situation. जो हमने कानून बनाए हैं, जब उन्हीं कानून का दुरुपयोग होता है, the laws made for domestic violence, for dowry cases, to protect women, to shield women, even in the confines of marriage, when those laws are misused, and cases, as you know, if you've been tracking in the past few months, have shown us these laws being misused, what happens then? That also requires a conversation. Let's have it. Joining us now on the stage is Deepika Narayan Bhardwaj, who is a woman who is taking on the misuse of laws that have been designed to protect women, but now, of course, are being used in ways that are harassing men, believe it or not. Dr. Alkanshree Dahar is also joining us. He's a managing partner of Law Offices of India, and with them is Rupam Mishra. And Rupam ji is one such individual who is dealing with cases like this. Our editorial director, Priya Sehgal, will be moderating this conversation. Priya ji, could we invite you on stage? Thank you, Rishabh, and I would like to welcome all of you on the show. And you know, we just heard the story of how, you know, Asha ji, Shekhar ji, Ratna ji, we heard their tragedy. We heard what men actually do to women. But the beauty of our show is that, you know, there are always two sides to a story. Let's not forget that every man is also someone's brother, someone's son. And to do a black and white look at this picture is also not possible, because there are people, you know, we have made laws. I think we had Seema here, the lawyer who's been fighting for these women to get justice. She also mentioned how difficult it is for these laws to be implemented. People find loopholes, people find a way out. Justice is not served. But again, those who want to subvert justice, they've used these loopholes. And sometimes the women, you know, the laws that are meant to help women, they give other women a bad name by misusing these laws. So, you know, that really is something we would also like to talk about today, because the victims are really there on both the sides. It is not just one side. So, हमारे साथ है Deepika Narayan, who is actually fighting this battle, trying to get a gender equity. I would not call her a woman activist or a men activist. I think you are fighting for a gender balance. Dr. Alkanshree Dahar is a lawyer. She's going to help us understand the legal system कैसा चलता है. And of course, we have Rupam, someone. Rupam, मैं पहले आपको, या maybe Deepika can tell us your story, कि आप क्या झेल रही हैं, थोड़ा बताएंगी, because आप अपने भाई के बारे में बताना चाहती हैं. Her brother is no more. Let her tell the story first. So, ma'am, good morning, everyone. अभी पिछले सेशन में हमने बात की लड़कियों के सपने की, और एक डायरी एंट्री है मेरे ब्रदर की, मंजीत मिश्रा, 2017 की, जिसमें उसने लिखा है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है. तो सपने लड़कों के भी होते हैं, मेरे भाई के भी थे. इस बार उसने अपनी नौकरी से समय निकाल के सोचा था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा. उसने मेरे साथ बैठ के फॉर्म भी भरा था, एंड उसके बहुत सारे सपने थे, लेकिन वो उसके सारे सपने बिखर गए 21 फरवरी को, जब वो सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला था. और आधे घंटे बाद, यूजुअली उसका कॉल आता था, मैं ऑफिस पहुंच गया, बट उस दिन कॉल आया कि ही इज़ नो मोर. सो एक दिन में, आधे घंटे में कैसे आपकी दुनिया पूरी पलट जाती है, वो हमने उस दिन देखा. बहुत सिंपल सी कहानी थी उसकी, कि वो किसी से प्यार करता था, दोनों परिवारों की रजामंदी से उसकी शादी हुई. बस शादी के 2 हफ्ते बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई. तो उसके बाद उस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के उसकी वाइफ और उसके इन लॉज़ ने उसको और हम पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि आप अपनी मदर और सिस्टर के साथ ना रहें, आप मेरे साथ एक अलग घर में रहें, एक अलग दुनिया बसाएं. उसने जब इन चीज़ों के लिए मना किया कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, अपनी माँ और बहन को नहीं छोड़ा जा सकता है, अपने पिता की यादों से आगे इतनी जल्दी मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी स्थिति इस हद तक पहुँच गई कि 1 महीने के अंदर अंदर उसे हम लोगों से दूर रहना पड़ा. फिर भी उसने सोचा कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं बैलेंस कर लूँगा, क्योंकि अब मैं किसी का पति भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ. लेकिन उसके इन लॉज को वो चीज़ें भी रास नहीं आई, एंड उन्होंने
पहले उसे हर तरफ से ड्रेन किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। एंड जब उन्हें लगा कि अब इस इंसान के पास कुछ नहीं बचा है कि जो वो और उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी वाइफ ने मेरे ब्रदर पे, जो एक ट्रेंड होता है आजकल सोसाइटी में, वो काम करना शुरू कर दिया। अपने घर गई, घर जाने के बाद 1 हफ्ते बाद हमारे घर पे सीधे किसी दिन मेंटेनेंस का नोटिस आ रहा है, किसी दिन CAW सेल में हमारे नाम पे कंप्लेन है, इस चीज़ का नोटिस आ रहा है, किसी दिन डोमेस्टिक वायलेंस केस हमारे अगेंस्ट लॉन्च किया गया, ये नोटिस आ रहा है। और कहानी ऐसी थी कि उन लोगों का भी नाम इसमें जोड़ा गया जो यहाँ रहते नहीं हैं, जो कभी एक छत के नीचे हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनका नाम बस इसलिए था क्योंकि वो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और वो हमारे साथ खड़े हैं। अभी इस केस में प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतने एक्सप्लिसिट एविडेंसेस होने के बाद, वो इतनी कंप्लेंट्स लिख के गया है, वो साफ साफ बता के गया है कि मेरे पास एविडेंसेस हैं, मुझे फॉलो अप किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 132 दिन लग गए हमें कानून को, हमें लोगों को ये समझाने में कि उसकी वाइफ भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। थैंकफुली आज 6 महीने होने को है इस चीज़ को, उसका बर्थडे है 3 दिन बाद, और आज 8 लोग इसमें जेल में हैं। लेकिन वो 8 लोग आपकी उनकी वाइफ की फैमिली से कनेक्टेड हैं? यस मैम, 3 लोग उनके फैमिली के, और बाकी जो उन्होंने असेसिन्स हायर किए, तो जो पूरा चेन हायरार्की होती है, आप मुझे शूटर से मिलवाइए, वो पूरा। जस्ट टू शेयर, रूपम के ब्रदर की फरवरी 2025 में पॉइंट ब्लैंक शूट करके मर्डर कर दिया गया। इनकी वाइफ और उनकी फैमिली ने असैसिन्स हायर किए थे उनको शूट डाउन करने के लिए। ही डाइड ऑन द स्पॉट। और उससे पहले जो रूपम बता रही थी, उनके ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस, 125 हर तरह के केसेस डाले गए। 3 करोड़ एलिमनी की डिमांड करी गई, लेकिन मंजीत चाहते थे कि वो अपनी इनोसेंस के लिए लड़े, अपने राइट के लिए लड़े। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, और वो अपनी लड़ाई जो है बहुत ही शिद्दत से लड़ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उनका मर्डर किया गया है, वो अपने एडवोकेट से ही मिलने जा रहे थे अपने केस की प्रिपरेशन के लिए, बट ही इज़ नो मोर नाउ। सो अलका, आई वुड लाइक टू ब्रिंग यू इन, क्योंकि ये लॉ कैसा है जिसके लिए मदद करने के लिए लॉ बनाया गया, दे आर सेइंग वी barely गेट जस्टिस फ्रॉम इट, लेकिन जिनको मिसयूज करना है वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस। इट्स वेरी इजी टू पुट केसेस against not just the boy but the entire family. So who has the upper hand? Is the law at fault? Do we need to rephrase the law better? Implementation is bad. Where is the problem? See, there's no denying the fact that these laws were made with the intent, and the intent was right, to safeguard the interest of the women. Again, there is no dispute about the fact that women are mostly on the receiving end. And that is why we had POSH, for sexual harassment at the office. We had the DV Act and so many other laws we enacted solely with the intention of safeguarding the women from domestic violence and harassment, etc. But the buck stops, I think, with the judiciary. The issue is that, the cases are there. I mean, first of all, let me just simplify it for you. The infrastructure is crumbling. We have so many cases and we don't have enough courts to be able to address them. We don't have enough judges. For the fact, when I started off my legal profession, to get into a court, I actually had to push my way through. We have like 150 matters in one court to be dealt by one judge. I'm not taking away the fact that, yes, the women have grievances and they need to be dealt with expeditiously. I'm not taking away the fact. But what I'm trying to say is that we have all the acts. As a lawyer who's been practicing for more than 20 years now, all the acts are there. And they are robust, very good acts in place, which should take care of all problems, all cases which the women face. But where is the problem? Like, to be able to address the problem, we have to know what the problem is. The problem is the infrastructure. We also have judges, for example, in the recent months, we have, I don't want to quote the judge's name. For example, we had the High Court saying that if a woman doesn't wear a Mangal Sutra and a Sindoor, she's not been a good wife. So that just shows the mindset of the judges. To be able to understand a woman's position and to be able to understand the merits of the matter,
he has to be very well trained. I mean, though we have the training of the judges, but I think it should be done more regularly and in a very robust manner. Second is, you see, these acts were all there, and I do a lot of family matters. So most of these acts, because they are women-centric, like, for example, Posh is only pertaining to a woman, right? So there can be guys also who get sexually harassed at workplace. I know I mean, it doesn't sound right, but it happens all the time. The DV Act, the Domestic Violence Act, is only pertaining to an aggrieved woman. I mean, a husband can also be aggrieved, but there's no law which pertains to that. So to be able to have a more gender laws, we need to have the right perspective, which I think only the legislature can do. For example, again, there was this very famous case which just happened a few weeks back, in which the Supreme Court said, you're a highly qualified woman, go and earn for yourself. And if you want to change the law, please go to the legislature. I mean, the Supreme Court's not going to sit down and start enacting the acts and the laws. It's not their job to do so. The judiciary, only what they can do is implement the acts and the laws which are made by the legislature. So the whole thing needs to start trickling from the top on. I mean, you just can't just pinpoint and say, you know, the judges are not right and they're not doing this thing. And second, what I have to emphasize on is the legislature, and there has to be a much more awareness about what's going on. The BNS, which has just been enacted, there's Section 69. I don't know if any of you have even read about it. Section 69 basically says is, if a man makes a false promise to a woman and then fails to marry her, I mean, they have an affair, so he can go to jail for 10 years. I don't see a more provision which is more perverse than this one. I mean, can't a woman make a false promise to a man? Of course she can, but she has been kept out of it. So the very intent, the very start of the legal provisions, in my opinion, need to be done in the right way. For that, we all need to start up. We are all having these programs. Of course, this is a great start, but we all need to be much more aggressive. Maybe not aggressive, assertive about it, and we need to be much more vocal about it. But going back to it, the judiciary, legal awareness, more infrastructure, these are the basic stuff that we need to start with to make sure that not only the woman, even the man or a child, everybody is on the same platform and they get the same attention, they get the same energy from the courts. Yeah, so I think that is a very good point that Alka has raised, that the laws that we have, they should be gender neutral. Now at this age where we're talking about women equality, men are also now demanding their rights, and in a way should we refuse them, because there are many cases where the men are victims, and Deepika has actually been sharing a lot of them with me. Deepika, tell us a bit more about Section 69, because I remember you've also brought it to our notice. Thank you so much, Priya, first of all, for having a session where we can talk about equality from both the gender side at a conference which is dedicated to women, because more than ever before, there is a lot of outrage against anybody talking about men. So thank you so much for having this session. Secondly, I would first want to acknowledge the fight and struggle of Asha Devi ji, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, और आरजी कार के जो विक्टिम के पेरेंट्स हैं उनको भी इनकी लड़ाई मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि शायद हम दूसरे पहलू से हैं, लेकिन स्ट्रगल जस्टिस की लड़ाई सेम ही है. हम लोग चाहे किसी एक्चुअल विक्टिम के लिए लड़ रहे हों या किसी झूठे केस में प्रताड़ित आदमी के लिए लड़ रहे हों, हम उसी सिस्टम से लड़ रहे हैं जो कि आज के टाइम पे काम करना मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है. सीमा जी ने बिल्कुल सही बात बोली. हमारी FSL जो लैब्स हैं वहाँ पे महीनों केसेस लंबित रहते हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आज के टाइम पे, जो निर्भया के बाद कहा गया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में महीनों में सुनवाई होनी चाहिए, वहाँ पे आज के समय पे सालों में केसेस आ गए हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आज ऑडियंस से शेयर करना चाहती हूँ वो ये शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी मेरे जैसा इंसान अगर कानून के दुरुपयोगों के खिलाफ काम कर रहा है, वो महिलाओं के खिलाफ नहीं है. धारा 498 का दुरुपयोग इतना ज़्यादा बड़ा कि आज के समय पे कोई एक्चुअल में अपनी बीवी को कितना भी पीट ना दे, उस आदमी का अरेस्ट होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है.
किसको इस चीज़ की खामी भरनी पड़ रही है? जो महिलाएं एक्चुअल में विक्टिम्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रेप लॉज जो कि निर्भया के टाइम पे दुरुस्त करे गए, उनका आज क्या हश्र हो रहा है। मैं अभी इस समय एक 31 साल के लड़के की मदद कर रही हूँ, 32 साल है उनकी उम्र, जिनका पिछले 8 साल से एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था। जून में उनकी किसी वजह से आपसी मनमुटाव हो गया पैसे के पीछे। जुलाई में उस महिला ने रेप केस डाल दिया, ये कहते हुए कि ये 8 साल से मुझे शादी का झांसा दे रहा था। उसके बाद उसके ऑफिस में जाके पॉश की भी इंक्वायरी डाल दी है। उनका पूरा का पूरा जो मैटर है वो ये है कि इस इंसान को मैं बर्बाद कर दूं क्योंकि हमारा रिश्ता चल नहीं पाया। अनफॉर्चुनेटली आज के समय पे ऑलमोस्ट 40 to 45% रेप केसेस जो इंडिया में दर्ज हो रहे हैं वो शादी का झांसा बोल के हो रहे हैं। 2 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप, 10 साल का रिलेशनशिप, 15 साल का रिलेशनशिप। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे केसेस आए जहां पे उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया, जहां पे शादीशुदा महिला किसी अन्य इंसान के साथ अफेयर में है और ये कह रही है कि उन्होंने उसका रेप कर दिया उसको शादी का झांसा देके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैडम, आप शादीशुदा थी जब आपका ये अफेयर चल रहा था, आप शादी का झांसा कैसे ले सकती हैं? अगर अडल्ट्री का कानून आज होता तो आपके ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लगता। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कानून का जो दुरुपयोग है वो पुरुषों के साथ तो बहुत ज़्यादा अति है ही। फरीदाबाद में मैं आपको एक केस बताती हूँ, धीरज गुप्ता उनका नाम है। 5 महीने वो जेल में सड़े रेप के एलिगेशंस में, जहाँ पे उन्होंने उस महिला को कभी देखा भी नहीं था। केस कैसे दर्ज हुआ? प्रिया, उन्होंने एक कहानी बनाई कि 7 महीने पहले मैं थिएटर में मूवी देखने गई थी, ये आदमी मेरे साइड में बैठा था, इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मुझे नशा हो गया, फिर मैं बाहर निकलने लगी तो इस आदमी ने मुझे बोला कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद बेसमेंट में इन्होंने जाके मेरा बलात्कार कर दिया। मैं उसके बाद रिपोर्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं डिप्रेशन में आ गई थी। अब 7 महीने बाद मैंने फेसबुक चलाते हुए इस आदमी की शक्ल देखी तो मुझे याद आया, अरे ये तो वही आदमी है। शी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सटॉर्शन गैंग that has filed multiple rape cases. Dheeraj was picked up on the spot. He was demanded 50 lakh of rupees. When he refused to pay because he had not done anything, he was put behind bars. अब एक और चीज़, धीरज की वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। उनके परिवार की महिलाओं ने पुलिस की इतनी मिन्नतें करी कि हमारा पति, हमारा भाई इनोसेंट है, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे सबूत हों, और मुझे बहुत बुरा लगा जब आशा जी ने और दूसरे पेरेंट्स ने कहा कि शेखर जी, मैं थोड़ा लेट आई थी तो नाम नहीं अच्छी तरह से सुन पाई। शेखर जी और रत्ना जी ने कहा कि कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं, फीमेल एडवोकेट्स हैं जिन्होंने उस लड़ाई को शायद थोड़ा धीमा करा। मैं आज बहुत एम्फेटिकली यहाँ पे बोल रही हूँ, जो आदमी किसी महिला के साथ ऐसा हश्र कर सकता है कि उसकी मौत हो जाए, उसको किसी भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। Death penalty is the penalty for someone who brutalizes a woman like that. But at the same time, women who are misusing these laws need to be punished severely. Otherwise, genuine victims जो हैं प्रिया, वो न्याय के लिए ऐसे ही लड़ती रहेंगी और हमारी कोर्ट्स जो हैं चोक होती रहेंगी false cases से। Can I pitch in here? I completely understand where that's coming from, but let's not just make it into woman's is always on the receiving end or man's on the receiving end. It can be either ways. Be it a woman, be it a man. It should not be done, and whoever is in the wrong needs to be punished. Again, then let's go back to that why this has not been done. I know this is a forum where the women and like I said earlier, the women usually are more on the receiving end. Now, I have also come across, in the recent past only, we have had all these cases in which the court observed that the woman had filed a false case. And all the court did was reprimand her and say, okay, you should not have done that. In foreign countries, in other jurisdiction, Perjury, Section 340, is a major issue. Like, for example, if somebody is lying on an affidavit, if you're going to a court, I mean, whatever you are saying before the judge and the court, you have to make sure that whatever they are saying is the fact. Because otherwise, if any judgment is not based on the fact, it's going to be a wrong judgment. So
the buck starts with the fact that the person who's going before the court has to be made 100%. 100%, he has to be 100% sure that whatever he's stating before the court is correct. And the punishment for that has to, in my opinion, be exemplary. They should be put in jail straight away. Perjury is major. Like, for example, again, there was a high court judge, I won't take his name. And what he said was, he said, whenever a case comes to the court, there's nobody on trial. The parties are not on trial. It's the judge who's on trial in a matter, because he has no idea. All the parties knows what the facts and the circumstances are. It's the judge who has to kind of, okay, now, should this be or should not that be? So, for example, if it's a woman or a man who's lied on affidavit, for example, this case what Deepika was talking about, that person should have been in jail straight away. This will act as a deterrent. This will stop people from coming to the court and saying whatever they need to. Even now, as a part of our pleadings, I'm just trying to compare the different jurisdictions to show that how I think the pleadings should be. Pleadings is what you state before the court, and the judge has to then decide upon what you've stated on the court on affidavit. For example, in our pleadings, what we do is, if somebody has bounced a check, for example, I'm just saying all that so we all understand that how it works. For example, if there's 138, it's dishonor of a check. In the pleadings that we write, it's dishonor of a check has a very special provision, 138 of the Negotiable Instruments Act. So if the check gets dishonored, all you have to do is go and file a complaint before the court. But no, in our pleadings, this amounts to criminal breach of trust, which is an entirely different civil provision. It amounts to cheating, it amounts to criminal breach of trust, it amounts to 138. So we write whatever comes to our head. And that we put before the court. And the judge also kind of knows, like it's a check bouncing, it only gets covered at 138. But we have, as lawyers, we have no business, or as litigants, we have no business putting before the court something which is not there. And if you are saying that it's cheating, then you better be in a position to be able to prove it. If you're not able to prove it, what happens? You waste the time of the court, you waste taxpayers' money. I mean, why are you saying all the things that you are unable to prove? And if you are lying on oath, there has to be a... I think that, Alka, sorry, I had to cut you short, but we're out of time. But I think what you've just summed up, जो हम सबने बातचीत की है कि system दुरुपयोग होता है, दोनों तरफ से होता है. So in the end, कोई checks and balances होने चाहिए, चाहे legal system की तरफ से, चाहे at the investigation की तरफ से, कि false cases ना होएं. क्योंकि जो laws महिला और हमारे women के protection के लिए हैं, जब उन्हीं को women misuse करती हैं, then that gives a bad name to the entire gender. प्रिया, बहुत क्विकली मैं एक चीज़ बताऊंगी. पिछले सिर्फ जुलाई में हम लोगों ने लगभग 60 पुरुषों के जो पति थे उनकी पत्नियों द्वारा मर्डर और 30 सुसाइड्स जहां पे उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए पुरुषों के ऊपर, वो हमने डॉक्यूमेंट किए हैं. सिर्फ जुलाई के आंकड़े में बता रही हूँ. आंकड़े कोई होते नहीं है इंडिया में जब पुरुषों की बात आए. तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी की अहमियत है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है. हमारे सिस्टम का, हमारी पुलिस का, हमारी कोर्ट्स का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देन एवरीबडी शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, वेदर अ वुमन और अ मैन. Fair enough. But like I said, it is the responsibility of all of us. This show is for women, by women. It is also a support group for women. So through this show, I really want to make an appeal to all of us. Let's help ourselves. आशा जी ने कहा था, मुझे बहुत दुख हुआ वो सुनने में कि women ही एक दूसरे की मदद नहीं करती हैं. So let's help each other. It's a sisterhood. Let's not file false cases. These cases are meant, the laws are meant to help those who really need it. We've seen the examples before us. We see them every day on headline in the paper. Let's give them justice by not defaming the laws that actually are meant to help. On that note, thank you so much, Aap sab aaye. Rupam, thank you. Thank you, Alka.